Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have successfully completed exercise you can see 12.2 up to question number 5th. Now it's time to move on from that. That means we are going to discuss question number 6th in this video, right? So understand it very carefully. So यहाँ पे इस question number 6 के अंदर क्या given है? An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of two different colors, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या given है, एक umbrella बनाया हुआ है, you can see by stitching 10 triangular pieces. So आप देख सकते हैं यहाँ पे triangular pieces आपको नजर आ रहे होंगे. So these are 10 in numbers, right? So यहाँ पे 10 triangular pieces को जोड़ के एक umbrella create किया गया है. Now you can see with a piece of cloth of two different colors, right? So हमारे पास यहाँ पे दो different colors के cloth हैं. Now you can take it one of, you can see, suppose if I just take it as red color, then other of you can see suppose green color, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर बात करें तो 5 तो रेड कलर के ट्रायंगुलर पीसेस हो जाएंगे and you can see then further you can see the 5 will be of green color, right? So 5 red plus 5 green, that will be total 10 triangular pieces, right? So यहाँ पे इस तरह से arrangement ले लेते हैं. Now you can see each piece is measuring 20 meter 50 centimeter. Let me just correct that. So 20 centimeter 50 centimeter and 50 centimeter. So यहाँ पे अगर मैं एक triangular piece की बात करूं, so आप देख सकते हैं इस triangular piece को. So here this triangular piece has the sides 50 centimeter 50 centimeter and you can see 20 centimeter, right? So ये तीनों sides मुझे एक triangular piece की given है. So that means सभी की same ही dimensions होंगी, right? So तीनों sides सभी triangular pieces की same ही होंगी. That means अगर मैं एक triangular piece का area find out कर लूं, then multiply it with 10. So यहाँ पे मेरे पास सभी 10 के 10 triangular pieces का area आ जाएगा, right? Now we have to divide it by 2 so as you can get the area of each cloth of each color you can see required for the umbrella. So यहाँ पे आप देख सकते हैं दो colors use हुए हैं, red and green suppose. So यहाँ पे 5 तो है क्या red color के और 5 क्या है green color के. So यहाँ पे अगर मैं उसको half कर दूंगा 10 यानी कि total area जो है 10 triangular pieces का उसको half कर दूंगा. So we will get you can see area of each colored you can see cloth required for umbrella, right? So let us now move on so you can understand when we will move on further into this question, right? So यहाँ पे start करते हैं इस question को. So the solution to this question will start from, I'm going to take only one triangular piece. सबसे पहले मैं इस triangular piece का area find out करूंगा. So अगर मैं इसको अलग से draw कर दूं like this, so आप देख सकते हैं ये 50 centimeter की है, ये भी 50 है and this is of 20 centimeter. So if I just assume it as A, B and C. So यहाँ पे मैं Heron's formula लगा के can calculate the area of one triangular piece, right? So you can see area of one triangular piece can be calculated by Heron's formula, right? So let me just apply that. So यहाँ पे अगर मैं Heron's formula apply करूंगा, so what is A here? So यहाँ पे आप देख सकते हैं A को मैंने 20 assume कर दिया, then B is 50 and C is also 50 centimeter, right? Now we also need the semi-parameter in Heron's formula that can be calculated by simply adding all the sides divide by 2. So यहाँ पे अगर मैं you can see add करूं A, B और C को, let me just write, you can see A की वैल्यू कितनी है आपके पास 20, then B की वैल्यू कितनी है आपके पास 50 and C is also 50, right? Divide by 2. अब मैं इन तीनों को ऐड करता हूं. So 50 plus 50 आपके पास कितना हो गया 100. 100 plus 20 that will be 120, right? So ये क्या हो गया एक तरह से इस triangular का parameter हो गया, right? Now divide by 2 that will be semi parameter, right? So आप देख सकते हैं 260 जा 120, right? So यहाँ पे 60 centimeter जो है वो आपको semi parameter की वैल्यू आ चुकी है, right? Now we know the semi parameter as well as the three sides ABC. That means now we can apply on, you can see Heron's formula over to this, right? So let me just rub this. So you can see area of
each triangular piece will be equal to, you can see, let me just apply on the formula. So that is S minus A, S minus B, S minus C, right? So now we have to simply substitute the values here. So यहाँ पे आप देख सकते हैं S की वैल्यू कितनी है आपके पास, अभी हमने फाइंड आउट की, that is 60, then multiply further, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं S minus A की बात करूं, so S is 60 minus A, A की वैल्यू आपके पास कितनी है 20, then further S minus B, so that will be 60 minus, you can see 50, again you can see S minus C, that will be 60 minus C की वैल्यू कितनी है आपके पास, again 50, right? Now further if I just solve this, so यहाँ पे 60 as it is आ जाएगा, then 60 minus 20 that will be 40, and 60 minus 50 that will be 10, and 60 minus 50 that is again 10 here, right? Now अब बात करते हैं इनके फैक्टर्स की. So मैं 60 को क्या लिख सकता हूं, let me just show you that we can write as 20 into 3, right? Then मुझे ये भी पता है कि 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, you can see 2 into 10, right? So now let me just talk about 40 here. So you can write it as 2 into 20, right? Now again 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 into 10. So you can see 2 to the 4, 4 10 जा 40, right? Then you can see this 10 and 10 will be as it is because यहाँ पे इनका pair already बन जाएगा, right? Now let me just rub the space. So here you can see further अगर मैं यहाँ पे पेयर बनाने की बात करूं, so यहाँ पे एक 10 का पेयर और बन रहा है, so एक 10 बाहर आएगा इधर से और एक 10 इसका बाहर आएगा, राइट? सो दो पेयर बन रहे थे तो एक एक 10 बाहर आ जाएगा. देन यू कैन सी टॉकिंग अबाउट द अदर पेयर्स, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 2 का पेयर बन रहा है, सो 2 इज ऑल्सो आउटसाइड. देन फर्दर अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, सो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 3 और 2 बचा, राइट? सो 3 into 2 is 6, राइट? सो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट में अंदर एज इट इज छोड़ दिया, राइट? So you can see if I just cross check, so you can see this 2 is outside, then you can see a 10 is outside, another 10 outside. So here you can see this 3 and 2 will get multiplied. So all the things is clear. So let me just multiply this. So 10 into 10, 100, 100 into 2, that will be 200 root 6, right? So that will be, you can see centimeter square, the area of, you can see each triangular piece used to make this umbrella, right? Now जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 तो थे रेड कलर के पीसेस एंड 5 आर ऑफ ग्रीन कलर, राइट? क्योंकि हमारे पास 2 कलर के पीसेस थे जिससे हमने ये यू कैन सी अम्ब्रेला क्रिएट किया बाय जस्ट सिंपली अटैचिंग द ट्रायंगुलर पीसेस. सो यहाँ पे बात करते हैं पहले रेड कलर के 5 क्लोथ्स की, राइट? सो हमें यहाँ पे अलग अलग दोनों जो कलर्ड के क्लॉथ यूज हुए हैं उनका एरिया फाइंड आउट करना है. सो अगर मैं रेड कलर के क्लॉथ की बात करूं, सो यहाँ पे 5 ट्रायंगुलर पीसेस यूज हुए हैं रेड कलर के और 5 ट्रायंगुलर पीसेस यूज हुए हैं ग्रीन कलर के. सो सबसे पहले रेड कलर का क्लॉथ कितना यूज हुआ वो कैसे निकालेंगे, जितना एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से, बिकॉज यहाँ पे रेड कलर के ट्रायंगुलर पीसेस कितने हैं, 5, राइट? सो यू कैन सी एरिया ऑफ 5 रेड कलर ट्रायंगुलर पीसेस is equal to, you can see 5 into जो एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया वो कितना है, 200 root 6, right? So if I just multiply this, so you will get, you can see 5 into 200, so 5 to the 10 and 2 0, so that will be 1000, right? So 200 into 5, that is 1000, then root 6 centimeter square. So you can leave it here, or you can also find out the square root of 6 as by the method that I have told you. So अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे, so the answer is correct, right? So let me just now talk about the green colored triangular pieces. So यहाँ पे again हमें पता है कि green color के triangular pieces कितने हैं, 5, right? So यहाँ पे जो green color का cloth होगा उसका area कितना होगा, so and you can see area of 5 green colored cloths, or you can say triangular pieces, right? So that will be again, you can see 5 into the area of each triangular piece. So that will be again 200 root 6. So again the similar result will come out, that is 1000 root 6 centimeter square. So आप देख सकते हैं दोनों जो क्लॉथ थे वो इक्वल क्वांटिटी के थे. It's red color of 1000 root 6 centimeter square area
and the green color cloth is also of 1000√6 centimeter square area. So this is how you have to solve such type of questions here. So students, let us move on to the next question now. So this time you can see question number 7 is given as a kite in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and sides 6 centimeter each is to be made of 3 different shades as shown in figure, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं एक kite है जो कि you can see is in the shape of a square, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने A, B, C, D एक kite बनाया जो कि एक square की shape में है. Now this is a square, right? Now let me just tell you कि square का जो diagonal है that is given to us as 32 सेंटीमीटर, राइट? So अगर मैं बात करूं डायगोनल की तो यहाँ पे AC और BD दो डायगोनल्स आपको नजर आ रहे हैं. नाउ यहाँ पे हमें ये चीज पता है कि स्क्वायर के डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं लेंथ में, राइट? सो बोथ द डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 32 centimeter that is given to us, right? So if I just make some space here, so I can write it down that the diagonal is of 32 centimeter each, right? So ये वाला जो diagonal है, I'm showing it down here that this is the length of diagonal as well, right? So both the diagonals are given to us of 32 centimeter, right? Now also अब इसमें ये square के अलावा नीचे एक triangular जो base है that is also you can see the part of this kite. So यहाँ पे ये जो triangular base है इसकी भी sides given है. आप देख रहे हैं जो इस triangular नीचे जो base है उसका जो base है actual में वो क्या है? इस kite का जो triangular base है उस ट्रायंगल का जो बेस है दैट इज गिवन टू अस एज 8 सेंटीमीटर. आप देख सकते हैं ये बेस 8 का हुआ एंड जो साइड्स हैं दोनों वो 6 सेंटीमीटर की है, राइट? नाउ यू कैन सी ये जो पूरा का पूरा काइट है ये 3 डिफरेंट कलर्स से मिलकर बना हुआ है. सो 3 डिफरेंट कलर्स मैंने यहाँ पे शो किए. यू कैन सी ये तो फर्स्ट पार्ट है, ये एक कलर का है. देन ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये सेकेंड पार्ट ये दूसरे कलर का है और ये नीचे जो ट्रायंगुलर बेस है ये जो है थर्ड कलर का, राइट? सो यहाँ पे टोटल ये काइट जो है टोटल 3 कलर्स में डिवाइडेड है, राइट? नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर इज हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट, राइट? सो यहाँ पे हमें इंडिविजुअली तीनों का यू कैन सी एरिया फाइंड आउट करना है कि कितना यू कैन सी पेपर यूज हुआ है हर शेड का, तीनों शेड्स का यू कैन सी टू मेक दिस काइट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट हियर. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइड किया हुआ मैंने यू कैन सी काइट को पूरे को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर, राइट? आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. सो मुझे यहाँ पे इंडिविजुअली तीनों यू कैन सी शेड ऑफ कलर्स का एरिया फाइंड आउट करना है, पेपर का एरिया, राइट? सो लेट मी जस्ट नाउ स्टार्ट माय सॉल्यूशन हियर विद यू कैन सी द अपर पार्ट, राइट? सो आप इसमें यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट का एरिया है, सो द एरिया ऑफ फर्स्ट you can see part or you can say the first shade, that will be better, right? So area of the first shade is equal to you can see the area of triangle CBD, right? So triangle CBD की बात करते हैं. So हम area of triangle CBD कैसे फाइंड आउट करेंगे, right? अगर मैं इस triangle को अलग से यहाँ पे बनाऊं, so let me just draw it right here. So आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ये triangle अलग से बना दिया. So this is C, this is B and this is D, right? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डायगोनल्स हैं वो हमें ये भी पता है कि 90 डिग्री के ऊपर यू कैन सी बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी है, राइट? तो हमें पता था कि एबीसीडी एक स्क्वायर है. सो वी नो दैट द प्रॉपर्टी दैट द डायगोनल्स एक्चुअली बाइसेक्ट ईच अदर, राइट? नाउ दैट इज नॉट द टास्क बट हियर आप देख सकते हैं यहाँ पे 32 सेंटीमीटर का बेस था इस ट्राइंगल का पूरा, बिकॉज हमें पता है कि डायगोनल कितने के हैं 32 सेंटीमीटर ईच. सो यहाँ पे बीडी की लेंथ भी कितनी होगी 32 सेंटीमीटर, राइट? अब ऊपर वाले ये जो बचा हुआ हिस्सा ये कितने का होगा, हाफ कितना होता है 32 का 16. मैंने आपको बताया कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे को 16 और 16 में डिवाइड करेंगे, राइट? सो दैट मींस ये ऊपर वाला पार्ट 16 सेंटीमीटर और नीचे वाला पार्ट भी 16 सेंटीमीटर, राइट? सो यानी कि बेस तो कितना हो गया आपके पास 32. सो ये इस दूसरे डायगोनल का अपर पार्ट हाफ कितना हुआ 16, बिकॉज मैंने आपको कहा डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे. सो 32 हाफ ऑफ कितना हो जाएगा 16. सो ये हिस्सा 16 हुआ. दैट विल आल्सो वर्क एज द हाइट फॉर दिस अपर ट्रायंगल ऑफ शेड फर्स्ट, राइट? सो हियर यू कैन सी बेस और हाइट पता है. दैट मींस वी कैन यूज द फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट, राइट?
So you can see area will be calculated by half into base into height. Now you can see clearly that base here is 32 into height you can see is 16, right? So 2 16 ja 32, right? 2 16 ja 32 होता है. Now 16 into 16. Let me just check out. So 16 into 16. So 6 6 is 36. 3 carry. 6 1 is 6. 7 8 9. Then 1 into 16 that will be 16. So 9 plus 6 that will be 15. That will be 2. So 256 you can see centimeter square is going to be the area of this shade first color, right? So यहाँ पे हमने एक इंडिविजुअल फाइंड आउट कर लिया. नाउ यू कैन सी अगर ये ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया 256 है तो नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया भी सेम निकलेगा. हाउ? लेट मी जस्ट टेल यू कि इस नीचे वाले ट्रायंगल यू कैन सी ए बी डी की बात करें तो इसका भी बेस कितना रहेगा 32 और हाइट कितनी रहेगी 16. सो 32 और 16 बेस हाइट सेम. That means the area will also be equal. So यहाँ पे लिख देता हूं मैं area of you can see also triangle ABD, right? So ये दोनों का एरिया आ गया that is 256. यानी कि you can see shade first का भी निकल गया and area of second shade का भी individual निकल गया. That is 256 centimeter square each, right? So you can see here हमने यहाँ पे दो shades का जो कलर है उनका एरिया जो है पेपर का वो फाइंड आउट कर लिया. So the remaining now is this triangular base, right? So let us move on with this, but first I'm going to erase the space. So now you can see अगर मैं यहाँ पे इस triangular base को अलग से यहाँ ड्रॉ करूं so let me just show you with a elaborated figure. So आप देख रहे हैं यहाँ पे ये A है, ये E है, ये F नाम दिया मैंने इसको, right? सो ये जो बेस है हमारे पास ये कितना है 8 सेंटीमीटर का और साइड्स कितनी है 6 सेंटीमीटर ईच की. नाउ जैसा कि हमें यहाँ पे इस ट्रायंगुलर बेस की तीनों साइड्स पता है सो वी कैन जस्ट अप्लाई ऑन द हीरोन्स फॉर्मूला. सो यू कैन सी यहाँ पे तीनों साइड्स को मैं ए बी और सी मान लेता हूं. सो नाउ यू कैन सी इन ट्रायंगल ए ई एफ यू कैन सी द बेस ऑफ काइट, राइट? लेट मी जस्ट राइट इट करेक्ट. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर एंड सी की वैल्यू आपके पास है 8 सेंटीमीटर द बेस, राइट? नाउ हमें यहाँ पे हमें पता है कि हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर हमें सेमी पैरामीटर की भी जरूरत होती है. सो दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यू कैन सी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2. सो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 6 प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 डिवाइड बाय 2. नाउ यू कैन सी 6 प्लस 6 12 plus 8 there will be 20 divided by 2, right? So अगर मैं इसको रिड्यूस करूं 2 के टेबल पे, so 2 10 जा 20. So आपके पास यहाँ पे s की वैल्यू कितनी आ चुकी है 10 सेंटीमीटर, राइट? नाउ यू नो हमें यहाँ पे s की वैल्यू भी पता है, a b और c तीनों साइड्स की वैल्यू पता है. Then now we can apply on Heron's formula to calculate the area of this triangular base, right? So let us move on. So you can see, let me just now find out the area of triangle AEF. So that can be calculated by applying Heron's formula. So that is S minus A, S minus B, S minus C, right? So let me just now substitute the values here. So यहाँ पे आप देख सकते हैं S की वैल्यू कितनी निकाली हमने, that is 10. So यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 10 multiply S की वैल्यू again 10 minus A. So आपके पास A की वैल्यू कितनी है 6 multiply अगेन s की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 माइनस b की वैल्यू आपके पास कितनी है 6 मल्टीप्लाई s की वैल्यू अगेन 10 माइनस c की वैल्यू आपके पास कितनी है 8, राइट? सो नाउ फर्दर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको. सो दैट विल बी यू कैन सी इलेबोरेटिंग दिस. सो यहाँ पे 10 एज इट इज आ जाएगा. नाउ 10 माइनस 6 आपको पता है क्या होता है 4. देन 10 माइनस 6 इज अगेन 4 एंड यू कैन सी 10 माइनस 8 दैट इज 2, राइट? अब यहां पर आप देख सकते हैं 4 का तो ऑलरेडी पेयर बन रहा है, सो इसको मैं फर्दर फैक्टर्स में ब्रेक नहीं करूंगा, राइट? देन यू कैन सी सो ये पहले 4 को पहले ही आउटसाइड लिख लेते हैं. सो ये एक पेयर बना, सो 4 आउटसाइड आ गया स्क्वायर रूट से. देन यू कैन सी इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 into 5. देन दिस 2 विल बी एज इट इज बिकॉज इट इज अ प्राइम नंबर. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 का एक पेयर बन रहा है. सो दिस 2 विल नाउ आउटसाइड 4 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा. एक पेयर जो 2 का बन रहा था उससे आउटसाइड आया. अंदर आपके पास क्या बच गया सिर्फ under root 5, right? Now 4 2 ja 8, so that will be 8 root 5
centimeter square, right? So this is going to be the area of this triangular base, right? So this is the third shade here. So you can also write, so the area of triangle AEF, or you can also say, so the area of, let me just correct that, of third shade, right? So that is actually the area of triangle AEF. This is of the third shade. So आप देख सकते हैं यहाँ पे individually हमने तीनों you can see shades का area निकाल दिया. This is of 256 centimeter. This is also of 256 centimeter square, and this is, you can see, of 8√5 centimeter square. Now you can further find out the square root of 5 as told by me. You can see by this method here, long division. So इससे आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके फर्दर 8 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल्स में भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. बट इफ यू जस्ट लीव इट हियर, दैट इज आल्सो ओके, राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व such type of questions here. So students, let us move on to the next question now. So you can see question number 8 is given as, you can see, a floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. So आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं of a floral design, जो कि फ्लोर्स पे you can see tiles की हेल्प से बनाया जाता है, राइट? सो फ्लोरल डिजाइन you can see. So this is kind of this. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस फ्लोरल डिजाइन के अंदर टोटल 16 टाइल्स यूज हुई हैं. लेट मी जस्ट काउंट देम. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16, राइट? सो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ 16 टाइल्स है, जो कि हर किस शेप की है? ट्रायंगुलर शेप की है. आप ध्यान से देख सकते हैं, राइट? अब यहां पर फर्दर ये गिवन है दैट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर. सो अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे मैंने इन टाइल्स के ऊपर इनकी यू कैन सी जो डायमेंशंस गिवन है, द तीनों साइड्स वो लिख दी हैं. आप देख सकते हैं एक ट्रायंगुलर पीस को अगर मैं अलग से ड्रॉ करूं लाइक दिस, सो दिस इज द ट्रायंगुलर पीस जिसमें आपको साइड्स गिवन है 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, राइट? सो आप देख रहे हैं 9, 28, 35, दैट इज द गिवन डायमेंशंस ऑफ वन सिंगल ट्रायंगुलर टाइल, राइट? सो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है? द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ ₹50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? सो यहाँ पे एक टाइल का सिर्फ अगर मैं सपोज कीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लेता हूं, सिर्फ इतना सा, राइट? सो सपोज दिस इज अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अ टाइल. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जो फ्लोरल डिजाइन है उसको पॉलिश करने में इस रेट पे यानी कि 1 सेंटीमीटर एरिया के कितने रुपीस लग रहे हैं? सॉरी, कितने लग रहे हैं चार्जेस? 50 पैसा, राइट? सो चाहे तो आप इस पैसा को रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट बाय 100. सो दिस इज द चार्ज ऑफ, यू कैन सी, polishing the 1 centimeter square area of this surface, floral surface, at the rate of 50 पैसा per centimeter square, right? So 1 centimeter square का कितना लग रहा है चार्ज? 50 पैसा, right? So now हमें क्या करना होगा? सबसे पहले एक ट्रायंगुलर टाइल का एरिया फाइंड आउट करना होगा. उसको मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरे फ्लोरल डिजाइन का एरिया आ जाएगा, राइट? सो उसको मैं क्या करूंगा? इस चार्ज से मल्टीप्लाई करूंगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चार्ज से, राइट? सो टोटल एरिया जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसको मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने में जितना चार्ज लगता है उससे मल्टीप्लाई करूंगा. दैट विल गिव मी द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग दिस होल टाइल्स, 16 टाइल्स, यानी कि फ्लोरल डिजाइन को पॉलिश करने में जितना चार्ज लगेगा वो मिल जाएगा, राइट? एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन, राइट? सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया. अब लेट मी जस्ट मूव ऑन फर्दर. सो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की. तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूं, लेट मी जस्ट टेल यू, इस ट्रायंगुलर यू कैन सी टाइल का एरिया फाइंड आउट करते हैं. अगर मैं यहाँ पे इसको A, B और C एज्यूम कर लूं, सो वी नो दैट इफ आई जस्ट टेक अ ट्रायंगुलर पीस, तो यहाँ पे हमें पता है, सो इन वन ट्रायंगुलर टाइल, लेट मी जस्ट करेक्ट दैट. सो वन ट्रायंगुलर टाइल, यू कैन सी A की वैल्यू आपके पास कितनी ली है मैंने? 35 सेंटीमीटर. देन B की वैल्यू कितनी है? 28 सेंटीमीटर. एंड C की वैल्यू कितनी है आपके पास? 9 सेंटीमीटर, राइट? नाउ हमें पता है कि बाय हेरोन्स फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ वन टाइल, राइट? सो यहाँ पे मुझे पता है कि हेरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज S, विच इज सेमी पैरामीटर.
So that can be calculated by a plus b plus c divided by 2. So यहाँ पे आप देख सकते हैं a की वैल्यू कितनी है आपके पास 35, b की वैल्यू कितनी है आपके पास 28, c की वैल्यू कितनी है आपके पास 9 डिवाइड बाय 2. So अब फर्दर अगर मैं इसको ऐड करता हूं, so 9 plus 8 that is 17, 17 plus 5 that is 22. So यहाँ पे अब 2 कैरी आ जाएगी, 2 plus 2 4, 4 plus 3 7, right? Now that means if I just divide it by 2, so that will be 2 3 is 6, 1 remaining, 2 6 is 12. So आपके पास कितना आ गया 36 centimeter as semi parameter, right? If I just cross check it, so आप चाहे तो इसको ऐड करके दे सकते हैं. So 8 plus 9 17, 17 you can see plus 5 that will be 18, 19, 20, 21, 22, right? Then 2 plus 2 4 plus 3 7, right? So that is correct here. So now you have to cross check while just performing the arithmetic, right? क्योंकि कहीं पे भी छोटी सी mistake will just wrong the whole question here, right? Now आपके पास s की वैल्यू आ चुकी है, a b और c की वैल्यू भी पता है. Now we can apply on the Heron's formula. So let me just rub this. So now you can see area of one tile is equal to, now let me just apply the formula. So s minus a, s minus b, s minus c, right? So आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले s की वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट की, that is 36. Then आप देख सकते हैं s की वैल्यू दोबारा क्या है 36 minus a. What is a? That is 35. Then again s की वैल्यू कितनी है 36 minus b की वैल्यू कितनी है आपके पास 28, right? Let me just extend this first. So यहाँ पे आप देख सकते हैं further s again is 36 minus c की वैल्यू आपके पास कितनी है 9, right? Now let me just further solve this. So 36 as it is, further 36 minus 35. So आप देख सकते हैं that will be 1 and 1, right? Now you can see 36 minus 28, so you can see that will be 8. I hope so. 8 is the right. So now 36 minus 9. So that will be, you can see 36 minus 9. So you can see that will be 16. So 16 minus 9. So that will be 7. And here it will be 2. So 27, right? So here you can see we can write 27. अब यहाँ पे इनको इनके फैक्टर्स में लिखना होगा. So 1 can be removed because सबको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा. So 1 is not going to be written again. So यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट हमें पता है क्या होता है 6, right? Because 6 6 to 36 होता है. So यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6, तो ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से. Now बात करते हैं 8 की. So that can be written as you can see 2 into 2 into 2, right? Then further आप देख सकते हैं 27 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 into 9, right? अब बात करते हैं पेयर बनाने की. So let me first make some space. So here let me just further solve this. So यहाँ पे 1 2 का पेयर बना तो ये बाहर आ जाएगा. So that will be here. Now आप देख सकते हैं अंडर रूट 9 क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 9 का 3, बिकॉज हमें पता है 9 क्या होता है 3 into 3. So यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, तो वो बाहर आ जाएगा. Now अंदर आपके पास क्या बच गया सिर्फ 2 into 3 that is root 6, right? Now 6 into 2 12, 12 into 3 that is 36 root 6 centimeter square. So this is going to be the area of one tile, right? So आप चाहे तो further root 6 को find out कर सकते हैं. So let me just now find out root 6 here. So let me just apply on this. Now you can see 2 2 ja 4, then subtracting it will give me 2. So इसको पेयर उतार लिया. Then add that 2 here, so that will be 4. Now put a decimal and a blank. So जो वैल्यू यहाँ आएगी वही यहाँ आनी चाहिए. So let me just check out. So if I just place 3 here, so here it will also be 3. So 43 into 3. So 3 3 is 9, 3 4 is 12. That is very less. Let me just move further. So यहाँ पे अगर मैं 5 place करता हूँ, so यहाँ पे भी क्या आएगा 5. So 45 into 5. Let me just check out. So 5 5 is 25. 5 4 is 20 plus 2. That will be greater, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 आ सकता है, right? So if I just place 4 here, so that will be also 4. So 44 into 4. So 4 4 is 16. 1 carry plus 1 17, right? So that is the correct one. अब यहाँ पे कितना आएगा माइनस करने पे, you can see if I just now take it up to just one decimal value. So आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट 6 किसके बराबर हुआ 2.4, right? So आपको यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है. So अगर आप डेसिमल रिमूव करेंगे, so that will be 10 in the denominator. So 36 into 24, right? So 4 6 is 24, then 6 carry, 4 3 12 plus 6
that will be 18, then 2, 6 is 12, 2 and 1 carry, 2, 3 is 6 plus 1, 7, right? So that will be 4, 8 and 2, 10, the 7 plus 2, 9. So 904 divided by 10. So आपके पास कितना आ जाएगा आप देख सकते हैं 90.4, right? So अगर आप चाहे तो further you can see find out up to 2 decimal values, but here we have done up to this. Let me just cross check it. So that will be, you can see, okay here. So आप चाहे तो 2 decimal values तक भी find out कर सकते थे, but that is okay, right? So यहाँ पे आपके पास 90.4 जो है, that is, you can see going to be the area of one tile here, right? So आपने यहाँ पे centimeter square place कर देना है. Now let me just move further. हमें पता है कि यहाँ पे total tiles कितनी थी 16, right? So let me just now find out the area of 16 tiles. So you can see area of 16 tiles will be 16 into, you can see 90.4, right? So let me just now multiply this. So 904 into 16, so 6 4 is 24, 6 carry, 6 0 is 0, then 6 as it is, 6 9 is 54, then 904, right? So 4 and 10, 4 plus 1 5, 9 plus 5, that is 14, right? So that will be 14504, right? Let me just cross check. So that will be 5, no, that will be 10, right? So one digit place, so 1450.4, right? Let me just cross check it. So it is approximate here. So now what is we have to do here कि हमें पता था कि एक टाइल के अंदर, सॉरी एक टाइल नहीं, पूरे फिगर के अंदर 1 सेंटीमीटर एरिया अगर मैं इतना सामान हूं, उसको पॉलिश करने में कितना चार्ज लग रहा है 50 पैसा, राइट? सो यानी कि टोटल एरिया जो हमने निकाला है 16 टाइल्स का, हम क्या करेंगे, इस टोटल एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस यू कैन सी 1 सेंटीमीटर के चार्ज से. हमें पता है 50 पैसा का मतलब क्या, रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 100, राइट? सो दिस इज एक्चुअली 50 पैसा इन रुपीज, राइट? अब यहां पे क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है, देन यू विल गेट द आंसर हियर, राइट? सो दिस इज योर टास्क नाउ, यू हैव टू सॉल्व दिस आउट. आप चाहे तो इसको डेसिमल को रिमूव करके 10 कीजिए, मल्टीप्लाई इट, देन इट विल बी 1000 इन द डिनोमिनेटर. सो दिस इज what you have to do at home on yourself. So this is going to be finally the charge of polishing the whole 16 tiles or the floral design, right? But do solve this arithmetic. That is your task, right? So this is how you have to solve such type of questions here.